तो बेटा अच्छा नहीं लगता है हमें. Okay, so once again, very good morning, students. So today the last topic of this chapter, alternating current, we are starting the transformer. So let us begin this transformer with this PPT, wonderful PPT made by Honorable Mani sir. So as we know that we have studied this electromagnetic induction, what that process we saw, and then alternating current, and then we produce that alternating current with the help of this generator in the previous topic. So after generating the this electricity, now next thing is what? कोई भी चीज हमने माल बना लिया है, अब माल बनाने के बाद उसको कौन सी समस्या आती है अगली बार, है ना. माल पैदा हो गया है हमारा, आलू प्याज टमाटर सब पैदा हो गए हैं. नाउ इसको क्या करना पड़ता है? What we have to do? What we have to do? Lot of onion is produced, suppose in this Nasik area. Now, what is the? It has to be used. It has to be consumed. Those onion. So it has to be. It should be stored. Stored, and only storing is important, or to make it use, what we have to do? What is required? आपको खाने को मिले, या मुंबई में किसी को खाने को मिले, या हिमाचल प्रदेश में ये ऑनियन जाए, इसके लिए क्या जरूरी है? Only storing is important. Transportation. Yeah, transportation is required. So very well, in a very systematic way, if these things are transported properly in a right time, then maximum efficiently उसको अगर हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया तो इसका पूरा पूरा यूज होगा. But what happens, you see, in if due to mismanagement or due to that road and transportation का कुछ problems की वजह से still many things are generated, produced. Onion है, यहाँ पर टमाटर है, आप देखते हैं बहुत सी चीजें प्रोड्यूस होती है, but they are not being transported in right time, है ना. वो खराब होने से पहले वहां पहुंच नहीं पाती, इसलिए बहुत हमारा मिसमैनेज की वजह से बहुत सा अनाज है या बहुत से फल है, सब्जियां हैं, वो खराब हो जाती है, फ्रूट्स भी खराब हो जाते हैं ना. तो क्या जरूरत है? प्रोडक्शन तो अच्छा होना ही चाहिए, साथ में एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन भी होना चाहिए, विदाउट एनी लॉस. एंड टू मेक इट, we are, that's why having transformer, which is helping us to send that electricity from one place to another. Okay, तो that is a transformer, है ना. तो बट वो कैसे भेजता है, तो वो हम समझते हैं कि ट्रांसफार्मर किस तरह से काम करता है. सो ट्रांसफार्मर is a device which converts low alternating current, low alternating voltage पर कोई चीज है, एनर्जी है, द ट्रांसफार्मर which converts low alternating voltage at higher current into higher alternating voltage at low current, या वाइस वर्सा भी होता है. तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो ट्रांसफार्मर, ट्रांसफॉर्म, नाम में ही क्या है लिखा हुआ, ट्रांसफॉर्म. सो इट ट्रांसफॉर्म मतलब नहीं है कि एक टाइप की एनर्जी दूसरे में ट्रांसफॉर्म करेगा, लेकिन लोअर वोल्टेज को ये हायर वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है, या हायर वोल्टेज को ये लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, राइट. और जब when it transforms या converts, suppose this it converts lower alternating voltage. Let us see. Yeah, when it converts this lower alternating voltage means V मान लीजिए वोल्टेज है, at higher current, है ना. तो वो क्या करेगा, लोअर ऑल्टरिंग वोल्टेज होगा तो वो हायर करंट पे होगा, बिकॉज वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट होता है वो पावर होता है, तो पावर तो सेम होती है. तो अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. बिकॉज
in that proportion, that way only. So to make lower alternating voltage at higher current, so at higher current is high. So if V is less, then I is high into higher alternating voltage. So what it will convert this voltage, which voltage it will convert, this lower alternating voltage, it will convert into a higher alternating voltage, but at lower current. So current क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. That means suppose मान लीजिए this is a 10, power is suppose 10 units, and so in this case voltage is 2 unit, and this current is how much, 5 units. So if it has to convert it into a higher voltage, so if voltage is to, we have to make suppose 10, then what will be the value of current? Tell me. What should be the value of current? Because power has to be same. Power is to be same. So if lower voltage tha at higher current, so we have converted this lower voltage V into a higher voltage V10, 10 कर दिया हमने इसको. So what should be the value of current? That simple question I'm asking. 10 is equal to 2 into 5 is equal to 10 into, this is fill in the blank. Yes, please on the mic. Please on the mic. 10, this is 10. Power must be 10 only. 2 into 5 is equal to 10 into. So what should be this? Fill in the blank. This is V, this is I. Yes, this is V, this is I. So this should be 1 only. So that only this transformer is. Please you keep that in the such a mode. As soon as I ask, immediately you on the mic, please. I know that this simple thing you must be knowing. So in between, I will ask something so that I can develop the lesson. Okay. So 2 into 5. So that only it says transformer is nothing, but it converts lower alternating voltage at higher current into higher alternating voltage at lower current, and vice versa also. And vice versa मतलब क्या हो गया, क्या हो जाएगा, मान लो इसको हम ऐसा उल्टा लिख देते हैं, 2 into 5. It converts higher alternating voltage, this V, at lower current to a lower alternating voltage at higher current. ऐसा भी हो सकता है ना. So on that basis there will be two types of transformer, that also we will see, but this and vice versa आप लिख लीजिए यहाँ पर, and vice versa, है ना, means उल्टा भी बिल्कुल सही है. So that is nothing but transformer. So I hope it is clear to all of you. I will erase it everything. So just I have given one of the example. It is not that always it will be 10 only. It can be anything. It can be anything, right? But it is high, then it will be low. But the product should be same only. Product should be same only if there is no loss of power. No loss of power. है ना. अगर हम मान रहे हैं कि लॉस ऑफ पावर बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली सेम रहना चाहिए. ओके, तो दैट मच आई थिंक इट इज दैट. सो अब इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि किस तरह से ये बनाया जाता है ना. सो ट्रांसफॉर्म इन इलेक्ट्रिक डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट at lower voltage at lower voltage into at higher voltage, or what, vice versa. So it either increases the input voltage or decreases the if it increases the input voltage, it is called as step up. मतलब अगर ये यहाँ से मिला है और छोटा कम मिला है उसको वोल्टेज, और ये इसको बढ़ा देता है, तो इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं. और अगर उल्टा करता है, ज्यादा वोल्टेज ले रहा है और उसको कन्वर्ट कर रहा है छोटे में, तो उसको हम स्टेप डाउन बोलते हैं. ये भी हम डिटेल में देखेंगे. तो दो तरह के हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं. वन इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वन इज स्टेप डाउन. स्टेप अप नाम में स्टेप अप, तो ये वोल्टेज के टर्म्स में बोला गया. स्टेप अप मतलब कम वोल्टेज मिला हुआ है, उसको ज्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है. जैसे अभी मैंने बताया था, 2 को 5 में कन्वर्ट कर रहा है, या 2 को 10 में कन्वर्ट कर रहा है. वोल्टेज को तो स्टेप अप हो गया. लेकिन अगर 10 मिला हुआ और उसको 2 में कन्वर्ट कर रहा है,
इट इज कॉल्ड एज स्टेप डाउन, राइट। चलिए, तो इसको हम कंस्ट्रक्शन की सहायता से भी समझ लेते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए वी आर हैविंग अल्टरनेटिव, मींस इट इज नॉट जनरेटिंग द current, it is only changing the current, its magnitude it is changing higher to low or lower to high, right? But nature of current it will not change, the alternating current will remain alternating current only, okay। तो ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, फ्रॉम दैट वी आर गेटिंग। तो यहाँ पर हम ये कॉइल्स की सहायता से यहाँ पर हमने कॉइल्स दे दी है, और यहाँ पर इस तरह से ये दिया है। तो ए ट्रांसफॉर्मर असेंबली कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स। ये डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ देखिए हमने 3 दिखाए हैं, यहाँ पर ज्यादा दिखा रखे हैं, राइट। एंड वाउंड ऑन अ सेम सॉफ्ट आयरन कोर। द कॉइल पी, ये देखो पी वाली कॉइल है, टू विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां से सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो इसको प्राइमरी कॉइल बोला जाता है, राइट। और जहां ड्रॉन हम करते हैं आउटपुट, आउटपुट के साथ ये सेकेंडरी कॉइल एस जिसको लिख रहे हैं हमने, सेकेंडरी कॉइल है, और इसके साथ हम लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक दैट हायर आउटपुट और वट एवर आउटपुट वी आर गोइंग टू टेक, that we are going to take on this side, so that is a load resistance हमने लगा दिया है यहाँ पर, right। तो इस तरह से ये सिस्टम होता है। and to prevent energy loss, यहाँ energy loss हो सकता है, we know that due to eddy currents, we know that if yes just a minute, please hold on। yeah, so हाँ, तो मैं बता रहा था, सॉरी फॉर इंटरप्शन। So I was telling that this to avoid that energy loss, what we do, we have studied in that eddy current that when eddy currents are formed due to change of flux is there in that, so that eddy currents are formed. So to avoid those eddy currents, what we will do, instead of making one block or one big metal और जो भी है, उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रिप्स के फॉर्म में ले लेंगे, so that the eddy currents will cancel, they will not add up. So that's why to this prevent the energy loss due to the eddy current, a laminated core is used, lamination करके इस तरह की हमने स्ट्रिप्स ले ली, छोटी छोटी स्ट्रिप्स ले ली, like that, है ना, इस तरह की स्ट्रिप्स ले ली एक के ऊपर एक, और these strips are also what, laminated one, means laminated कर दिया, insulation कर दिया इसको, तो the current eddy current produced in this strip will not pass on to another strip, so like that एक के ऊपर एक इस तरह से रखी हुई है, so that इसमें जो change of flux की वजह से जो current produce होगा, induced current, that eddy current will not be that much which will heat up this transformer, and उसकी वजह से जल भी सकता है ट्रांसफार्मर, और कभी कभी बहुत ज्यादा हो गया तो एनर्जी लॉस तो होगा ही ज्यादा, इन द फॉर्म ऑफ हीट द एनर्जी विल बी दिस, जाना जाएगा। तो पहली बात क्या है, तो प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड है ये हम देख लेते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया आप लोगों को, आई थिंक इट इज कैन बी सीन। यू मे नॉट हैव टू मेक इन दिस 3D फॉर्म, कोई जरूरत नहीं है, आप एक भी ऐसे कॉइल बना देते हैं और इसमें प्राइमरी में 3-4 दिखा दिया और यहाँ पर ज्यादा दिखाना है। आइदर यू कैन शो more in primary and less in secondary, or less in primary and more in secondary, the turns you can show in that way, तो हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं। so transformer is based on the mutual induction, as we know that there is a induced current will be induced EMF will be developed and induced current will be produced, उसी को हम आगे यहाँ पर ले जाने वाले हैं। so it is based on that, and how, what is that, it is the phenomenon of inducing EMF in the secondary coil, secondary coil में induced EMF produce करना है due to change of current in the primary coil, primary coil में change of current होगा,
और ड्यू टू दैट इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में, है ना, इन तो ड्यू टू अ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल एंड हेंस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल. तो change होगा magnetic flux linked with the secondary coil, and when the change in the magnetic flux linked with the secondary coil will take place, then induced EMF will develop in the secondary coil. So that is the principle of this transformer. It is based on the mutual induction. Primary coil में हम लोग current change कर रहे हैं, due to that it is changing in that this one. So now coming to the theory of that, very small theory is there. हम लोग पढ़ ही चुके हैं. हमें इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है या इंड्यूस ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इट डिपेंड्स अपॉन द rate of change of flux that we have studied in the Faraday's laws of electromagnetic induction also. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना ज्यादा होगा उतना इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ज्यादा होंगे तो भी इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा. तो वो इंड्यूस ईएमएफ का हम फार्मूला देख लेते हैं. दैट वी नो दैट EP is the induced EMF produced in the, suppose, the primary coil. Suppose NP is the number of turns in the primary coil. You write also separately, right? So यहाँ पर हम लोग नहीं लिख रहे हैं. So you write what is EP, what is NP. So NP is the number of turns in the primary coil. EP is the induced EMF in the primary coil. And rate of change of flux is d phi by dt. So this d phi by dt is the rate of change of flux. Similarly, so you can give this is equation 1, this is equation 2. Similarly, due to that, what will happen? The induced EMF, this produced in that, this is the induced EMF produced in the secondary coil minus this, and this negative sign, as you know, that is always there is a position. So ये negative sign तो आता ही है, that all you know. So minus ns d phi by dt, rate of change of flux is that. So these two relations very easily you can write from our previous knowledge. Ns is the number of turns in the secondary coil, Es is the induced EMF in the secondary coil, and phi is the magnetic flux linked with the with each turn of the primary or secondary. Yeah, phi also you can write separately. What is phi? Phi is the magnetic flux linked with the each turn of the primary or secondary coil at any instant. What instant? At t, dt. dt time d phi is the flux, right? So by Lenz's law we know that this oppose करता है ये इस चीज का, इसलिए हम लोग देख सकते हैं माइनस साइन भी लगा रखा है हम लोगों ने. So now from this we can just divide left hand side by left hand side and right hand side by right hand side. So what we can get, this d phi by dt will cancel, so you will get ns upon np. So es upon ep is equal to ns upon np, and that we call, give a name k, because it is a constant. It is the number of turns in secondary to the number of turns in primary, or it is the ratio of this es upon ep, same quantities ratio. So it should be a constant number only, positive number. Okay, and that positive number is ns upon np is equal to k. और इस ns upon np कई किताबों में हम ns upon np नहीं n2 upon n1 लिखते हैं. E2 upon E1 is equal to N2 upon N1. But this NS upon NP लिखेंगे तो थोड़ा सा और clarity रहेगी कि this is the number of turns in secondary to the number of turns in primary. लेकिन हमेशा number of turns in secondary ऊपर लेना है और number of turns in primary नीचे लेना है, because number of turns in secondary to the number of turns in primary का ratio को ही this K बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोला जाता है. दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. आप E1 अपॉन E2 भी ले सकते हैं. E1 अपॉन E2 आपने ले लिया मान लीजिए, या EP अपॉन ES ले लिया. सो EP अपॉन ES विल बिकम N1 अपॉन N2, that is equal to NP upon NS. But this will not be called as the K, it will be called as 1 upon K. ये ध्यान रखिएगा बच्चों, है ना, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को. अंडरस्टूड? हेलो? Yes, sir.
हाँ, so ns upon np is equal to k. So np upon ns, suppose if you are taken for any numerical purpose or something, so you should understand that np upon ns will be equal to 1 by k. So this transformation ratio is that. Now as I told you, अब दोनों तरह के ट्रांसफार्मर ले लेते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन. तो चलिए, का रेशियो होता है ये सेकेंडरी के टर्न्स का रेशियो टू द प्राइमरी के टर्न्स के रेशियो को हम टर्न्स रेशियो भी बोलते हैं. इसको के इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्न्स रेशियो और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, राइट. अब दो तरह के ट्रांसफार्मर है, चलो उसको बाद में कर देखते हैं. चलिए, एक जस्ट आई विल रिमूव दिस वन ऑल्सो फ्रॉम हियर सो दैट यू कैन see this. And as I told you, for an ideal transformer, आइडियल वैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन हम अभी मान के चल रहे हैं, सपोज दिस इज आइडियल केस दैट नो एनर्जी इज गेटिंग लॉस्ट. सो व्हाट विल हैपन, द आउटपुट पावर विल बी डेफिनेटली इक्वल टू द इनपुट पावर. बिल्कुल आउटपुट पावर किसके इक्वल होगी, इनपुट पावर के इक्वल होगी, मींस देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. सो इन दैट केस डेफिनेटली वी कैन राइट ES into IS is equal to EP into IP. That is nothing but the total power. Yeah, this is what PO, that is output power, and this is PI, that is input power. So output power PO is equal to ES into IS. ये output power हो गई यहाँ, power output, and this is here पावर इनपुट. सो जितनी इनपुट पावर दी है उतनी ही आउटपुट पावर आ रही है. दैट मींस देयर इज इट इज आइडियल ट्रांसफार्मर, मींस इट्स एफिशिएंसी इज 100%, राइट. तो डेफिनेटली वी कैन राइट PO is equal to ES into EI because P is equal to voltage into current. इस तरह से PI is equal to EP into ES लिख लिया, EP into IP लिख सकते हैं. So that way we can write, right. तो अब इसी को हम लोग थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो वी कैन राइट ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS. तो एज आई टोल्ड यू, दिस यू कैन गिव 1, दिस यू कैन गिव 2, this equation you can give 3, and one more it is 4. So if you combine this 3 and 4, what you can write all together? ES upon EP is equal to NS upon NP, but ES upon EP is equal to IP upon IS also. So one relation you can make, that is a very, very popular relation and very useful relation for the numerical purpose also. This is this. So ES upon EP. So you can write here by using 3 and 4. We can write this 5. So ES upon EP is equal to IP upon ES, but ES upon EP is also equal to NS upon NP. So we can write this ES upon EP is equal to NS upon NP. So this all together, this, and one more you can write here, it is K. All together it is equal to K. So 4 relations you can make. ES upon EP is equal to IP upon IS is equal to NS upon NP is equal to K. So this way, this is a very, very important relation for doing numerical problems, conceptual problems, many, many things. And from here also you can see that अगर ये दोनों कैसे हैं, इनवर्स है, E बढ़ता है तो ES is inversely proportional to IS, है ना. तो अगर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट को डिक्रीज होना पड़ेगा टू मेक द पावर सेम, राइट. तो ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं. सो अंडरस्टूड दिस मच वेरी क्लियरली. और इसी के बेस पर हमारी एफिशिएंसी आती है. तो एफिशिएंसी चाहे आपने 11th क्लास में हमारे हीट इंजन की हो या कार्नो इंजन की हो, या efficiency is what? It is output upon input. So if output is also same and input is also same, what will be the efficiency? What should be the efficiency? It should be 1, right? Output and input is same. So definitely it will be 1. And in percentage, if you want to write, you can write that it is 100%. So ES upon EP is equal to 100% for an ideal transformer. If output is also same and input is also same. So efficiency is nothing but output power upon input power. तो ये हमारी 100% efficiency हो गई. तो जैसे मैंने बताया आपको, अभी दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं. तो अब हम लोग NS और NP के फॉर्म में इसको समझ लेते हैं, दो तरह के कौन कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं. सो अभी हमने पहला वाला ये वाला दिखा दिया. देखिए, दिस इज द
प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज्यादा है. देयर आर मोर नंबर ऑफ टर्न्स, यू कैन सी. जस्ट इट इज अ सिंबॉलिक. इट इज नॉट कि तीन ही टर्न्स होते हैं. देयर आर नंबर ऑफ टर्न्स, but is a symbolically we are shown here some more number of turns and here some less number of turns. That means ns is greater than np, so definitely transformation ratio will be greater than 1 because ns upon np is a transformation ratio. मैंने बताया आप लोग को, right? So if it will be greater than 1, that means k will be greater than 1 because ns is greater than np. Definitely es will be also be equal greater than ep, and es will be smaller than is will be smaller than ip. So in a step up transformer, as per our last हमारा जो relation है, ns अगर np से बड़ा होगा तो es ep से बड़ा होगा, और es अगर ep से बड़ा होगा, output voltage is greater than input voltage, then definitely output current should be less than the input current to keep the total input power is equal to output power. So this is nothing but step up transformer. Similarly, step down transformer, number of turns in primary is more than the number of turns in secondary. तो ये हमारा इस तरह से होगा, जस्ट अपोजिट यू कैन शो इट. तो ये हमारा इसकी बात है. तो any doubt in this, you can ask me. Otherwise we will go for the energy losses in the transformer. Though here for we have considered ideal transformer, but nothing is ideal. You know that there is some loss, always there is some loss. So that loss we can what are the reasons of those losses and how those losses can be minimized. Those things we will study here, and these losses are very much important. I tell some of the times to the student that if you don't know these losses, you will have to face many losses, है ना, in terms of marks. ऐसा मैं थोड़ा सा मजाक में बच्चों को बोलता हूँ, अगर आपको लॉस नहीं लेना है ना अपने मार्क्स का, तो ये लॉसेस जो है, एनर्जी लॉसेस, ये आपको पता होने चाहिए. तो ये हम लोग वन बाय वन करते हैं. वेरी आप लिखते जाइएगा साथ में, और यू कैन राइट आफ्टरवर्ड्स, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द लॉसेस एंड व्हाट आर द रीजंस एंड हाउ टू मिनिमाइज दिस लॉसेस. So first one is the copper loss, right? So what is this copper loss? Heat is produced due to the resistance of the copper windings, है ना. कॉपर वाइंडिंग्स, ये कॉपर वाइंडिंग्स की जाती हैं तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है उसमें. copper windings of primary and secondary coils when current flows through them. As you know that when the current flows through them, then it heats up, you know, wire heats up. कौन से फार्मूले से हीट अप होता है? हीटिंग एनर्जी का फार्मूला है ना, आपको पता है ना, हीट H इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है? अगर करंट फ्लो होगा, व्हाट, I square RT, पता है ना, H is equal to I square. So if the current is flowing, then due to that, what will happen? There will be heat will be generated, heat will be produced due to the resistance of the copper windings, है ना. तो कॉपर वाइंडिंग्स के रेजिस्टेंस की वजह से ये हमारा ये प्रोड्यूस होता है. तो इस वजह से हीटिंग की वजह से ये प्रोड्यूस होता है. तो ये चूंकि पहले कॉपर की वायर्स यूज किया जाती थी, अभी तो कॉपर वाइंडिंग की जगह पर हम दूसरे कंडक्टर भी यूज कर रहे हैं, बट सिंस देन क्योंकि ये शुरू में कॉपर वाइंडिंग से यूज किया जाए, कॉपर को लगाते थे, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया कॉपर लॉस, राइट. तो वी विल नॉट नाउ से दैट एनी अदर लॉस, अदर मटेरियल यूज किया, बट वी विल कीप ऑन सेइंग उसका नाम पड़ गया तो पड़ गया. So some energy is lost due to the heating of this copper wires used in the primary and secondary windings, and this power loss, energy loss I square RT होता है, या power loss हम बोल सकते हैं I square R होता है. So I square R is the power loss or I square RT is the energy loss. It can be minimized by using which type of wires? बताइए. चलिए, अब हमको ये लॉस मिनिमाइज करना है, ये हीटिंग इफेक्ट कम हो ये चाहिए. तो व्हाट वी कैन डू, आई तो हमारा जितना फ्लो होना है उतना ही होना है, उतने ही टाइम के लिए होना है. तो व्हाट वी कैन डू टू मिनिमाइज दिस लॉस, टेल मी हाउ दिस कॉपर लॉस कैन बी मिनिमाइज. तो साथ साथ में हम करते जाएंगे. कॉपर लॉस, व्हाट इज कॉपर लॉस, व्हाई इट इज प्रोड्यूस्ड, एंड नाउ हाउ इट वी कैन मिनिमाइज दिस कॉपर लॉस.
by minimizing this r of that wire. देखो अभी ये कनेक्शन आ गया करंट इलेक्ट्रिसिटी का, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए. सो इफ सो टू मिनिमाइज दिस H को कम करना है तो R को भी कम होना पड़ेगा. R को कम करना है तो बाय दिस रूल व्हाट वी विल हैव टू डू, व्हाट विल हैव टू डू, वी विल हैव टू इंक्रीज द एरिया. थिक कॉपर वायर्स हमको यूज करना पड़ेगा. सो एरिया यू विल हैव टू इंक्रीज. So if you increase the area, R will decrease. If R will decrease, then definitely H will decrease, or the power will decrease. Understood? Understood? Yes or not? Please Yes, tell. sir. Okay, thank you. So and in between you please involve yourself also, है ना. तो माइक थोड़ा सा अगर आप उस मोड में रहेंगे कि जैसे मैंने कुछ पूछा, यू click on that on button and you on it, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों. So shall I remove it, shall I erase it? So this you understood. See the current electricity area, तो थिक वायर्स यूज किया जाता है. यहाँ पर भी आप देख रहे हैं थिक वायर्स यूज किया जाता है, और तो थिक वायर्स यूज करेंगे तो हमारा ये कॉपर लॉस वी कैन मिनिमाइज. नाउ तो दिस कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग थिक वायर्स फॉर वाइंडिंग. वाइंडिंग के लिए हम थिक वायर्स यूज किए. सेकेंड लॉस इज द फ्लक्स लॉस, है ना. इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज नॉट परफेक्ट, सो एट सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेस्टेड. अभी देखो आप यहाँ पर दिख रहा है ना, बहुत दूर दूर है. अगर काफी दूर दूर है प्राइमरी और तो थोड़ा सा फ्लक्स क्या होगा, वेस्टेज हो जाएगा उसका. तो ये वेस्टेज जो होता है, फ्लक्स लीकेज जो होता है, that is produced by the primary may not be fully passed through the secondary. तो प्राइमरी और सेकेंडरी अगर दूर दूर है तो ये लॉस हो सकता है. तो some of the flux may leak into that. So this loss can be minimized by winding the primary and secondary coil over one another. हमने बताया था ना पहले भी आपको. तो अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ज्यादा चाहिए, इफेक्ट ज्यादा चाहिए, इंडक्शन ज्यादा चाहिए, म्यूचुअल इंडक्शन, तो क्या करेंगे, एक प्राइमरी के ऊपर ही वहां पर ही सेकेंडरी को वो वाइंड कर देते हैं. सो वी कैन मिनिमाइज इट बाय लिंकिंग, कैन बी मिनिमाइज दिस लिंकिंग इसको बोलते हैं. सो कैन बी सॉरी लिंकिंग कैन बी मैक्सिमाइज, है ना. लिंक ज्यादा हमने कर दिया तो वेस्टेज कम हो जाएगा. तो इस तरह से हम लोग लीकेज कैन बी मिनिमाइज बाय लिंकिंग, है ना. लिंकिंग कैन बी मैक्सिमाइज, and then in that case the leakage into the air can be minimized. So this loss can be minimized by winding the primary and secondary coils over one another. So I think it is clear this loss, why it is taking place, and how we can minimize this loss. So all these things are there. Now next is iron loss. So what is this? अब iron losses, है ना. आयरन लॉस क्या होता है ये आप समझ लीजिए. अब आयरन लॉस दो तरह का होता है. व्हेन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द आयरन कोर, हमें पता ही है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अगर लिंक किया हुआ है. अब जैसे आयरन वगैरह यूज नहीं कर रहे हम लोग, दूसरा भी कर रहे हैं, बट वो नाम पड़ गया आयरन लॉस, तो आयरन लॉस ही है. सो व्हेन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द आयरन कोर, आयरन का कोर है वहां पर, मान लीजिए जो भी है, तो एडी करंट्स आर सेटअप which in turn produce heat and energy is wasted. ये होता ही है. और एडी करंट से को हमको मिनिमाइज करना है, तो हमने अभी बता ही दिया आप लोगों को. ये जो एडी करंट, ये यहाँ पर आयरन का है. अभी आजकल तो एल्यूमिनियम और दूसरी वाइंडिंग्स आ गया है, बहुत सी ये जो स्टेप्स है हमारी दूसरे मटेरियल की यूज करते हैं. तो ये हमको मिनिमाइज करना है एडी करंट की वजह से. आयरन लॉस दो तरह से हो रहा है. एक तो एडी करंट लॉस हो रहा है, तो ये हीट, और डेफिनेटली हम जानते हैं एडी करंट जब प्रोड्यूस होंगी तो इट विल जनरेट हीट, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो सकती है. और अगर बहुत ज्यादा हो गई, कभी हो सकता है कि क्या हो जाए, हमारा ट्रांसफार्मर ही जल जाए. तो एडी करंट्स आर रिड्यूस बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर्स, पहले मैंने बता दिया. सो इंस्टेड ऑफ सॉलिड आयरन ब्लॉक, because in laminated core the eddy currents are confined with the lamination and they do not get added up to produce large currents, है ना. तो ये हम जानते हैं. तो इन अदर वर्ड्स देयर पाथ आर ब्रोकन, उनको साथ साथ में ऐड होने की बजाय हम उनका पाथ ही वी हैव ब्रोकन दैट पाथ, देन कंटिन्यूस नहीं होगा, तो वो एड अप नहीं होगी और हीट ज्यादा जनरेट नहीं होगी. तो ये देख लीजिए, ये सॉलिड आयरन कोर है,
This is a solid iron core. So instead of that, you see this type of laminated core is made. तो अब ये यहाँ पर तो एक साथ प्रोड्यूस हुई थी, लेकिन इस तरह से हम स्ट्रिप्स तैयार कर लेंगे तो ये वाली जो एडी करंट प्रोड्यूस हुआ ये इसके साथ एडप्ट नहीं होगा, ये इसके साथ एडप्ट नहीं होगा. So this way it is that. Understood? Right? Any doubt in Yes, this? sir. No. Okay. Now सेकेंड वन, दिस आयरन लॉस में ही हम लोगों ने मैग्नेटिज्म में आपको बताया था कि हिस्टेरेसिस लॉस भी होता है. So when this alternating current is passed, the iron core is magnetized and is demagnetized. So magnetization and demagnetization process is going on, and this in repeating circle it is happening, है ना. सो इन वन साइकिल जितना ये जो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है तो इसकी वजह से जो एनर्जी लॉस होता है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं. ये मैंने वहां पर ही आपको बता दिया था मैग्नेटिज्म पढ़ाते समय. और इस टाइप का जो लूप बनता था वो हमने हिस्टेरेसिस लूप देखा था, एक लीफ जैसा बना था, हम लोगों ने देखा था. सो जितना थिन होगा ये लूप उतना ही एनर्जी लॉस कम होगा. तो हम थिन लूप बनाने की कोशिश करते हैं उसके लिए. तो वो थिन लूप जिसमें बनता है ऐसे मटेरियल को हम यूज करते हैं. तो वही बात यहाँ पर है, इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग सुटेबल मटेरियल विद थिन हिस्टेरेसिस लूप. ऐसा मटेरियल हम लेते हैं जिसमें कि मैग्नेटाइज हो जाए, वो तुरंत से डीमैग्नेटाइज भी हो जाए, है ना, बहुत ज्यादा देर तक वो न रहे. तो इस तरह का हम लोग यूज करते हैं. तो हम इस लॉस को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, है ना. तो ये हिस्टेरेसिस लॉस वी कैन this minimize by you choosing the material, coal material having narrow hysteresis loop, narrow hysteresis loop का यूज करके हम कर सकते हैं. And then this loss is due to vibration. अब vibration होगा तो some energy loss, energy is lost in the form of mechanical energy. So due to vibration of the core, vibration of the core, और वो vibration होता है तो humming noise आता है, humming noise, है ना. आप लोग अगर कभी ट्रांसफार्मर के पास से गुजरेंगे आपके एरिया में जो है, हमारे KV1 के बाहर भी आप देखेंगे एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है. सो दैट ट्रांसफार्मर, तो उसके पास से गुजरेंगे तो थोड़ी सी आवाज आती रहेगी, हमिंग साउंड टाइप. तो ये जो है ड्यू टू मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट जिसको बोलते हैं बच्चों, तो ये उसकी वजह से आता है. तो इस हमिंग साउंड को जो हो रहा है इसकी वजह से स्लाइट थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, इसमें मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बोला जाता है इसको. सो दिस ड्यू टू दिस तो थोड़ा सा एनर्जी लॉस होता है, बिकॉज एनर्जी तो चाहे वो साउंड के फॉर्म में हो, हीट के फॉर्म में हो, एनर्जी लॉस तो लॉस ही है. सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लॉस वी कैन say. So that way it is getting lost in many ways. So now just have a look of the uses of transformer. तो मैंने बताया कि जनरेटर तो जनरेट ही कर रहा है, but transformer is used in different ways. बहुत वेज में यूज करते हैं इसको, ट्रांसफार्मर को. कभी कभी स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, कभी स्टेप डाउन यूज किया जाता है. तो दोनों टाइप के हम ट्रांसफार्मर का यूजेस अभी देखते हैं. तो कुछ स्मॉल ट्रांसफार्मर जो होते हैं आर यूज इन रेडियो रिसीवर्स, टेलीफोन्स, लाउड स्पीकर्स एक्सेट्रा. तो यहाँ पर रेडियो रिसीवर और इसमें हम जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं बच्चों, यहाँ पर हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज चाहिए, लेकिन वो बहुत कम चाहिए. हमारे घर में सप्लाई आ रही है वो कितने वोल्ट की आ रही है, एसी. How much volt AC is coming to us? घरों में वोल्टेज जो आ रहा है वो कितने वोल्ट का होता है बेटा, हमारे घर में कितने वोल्ट का एसी आ रहा है, बताया था ना हमने. 220. हाँ 220, 230, 230, लाइक दैट इट इज कमिंग, राइट. तो अब हमें सारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं दे आर नॉट रनिंग एट 230 वोल्ट, तो वी हैव टू रिड्यूस इट. तो वो रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं, राइट. तो ये हमारा होता है. इन वोल्टेज रेगुलेटर्स फॉर टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कंप्यूटर वगैरह में भी हम वो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इसको यूज, ट्रांसफार्मर को यूज किया जाता है ना. इन स्टेबलाइज पावर सप्लाईज भी यूज किया जाता है. आजकल तो टीवी और फ्रिज वगैरह वो इनबिल्ट वोल्टेज रेगुलेटर वगैरह, स्टेबलाइजर उसमें आ जाता है अंदर ही, लेकिन पुराने जमाने में स्टेबलाइजर अलग से हमको लगाना पड़ता था. अभी तो बहुत अच्छे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आ रहे हैं जिसमें सारा कुछ अंदर ही इनबिल्ट होता है. तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन ऑब्टेनिंग लार्ज करंट
और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के लिए भी हमें लार्ज करंट जब चाहिए होता है तो उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो ये सब चीजें हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। तो एक्सरेज जब हमें प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस ट्रांसफार्मर इज दैट व्हेन वी आर ट्रांसपोर्टिंग दैट जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी, जो हमने एसी जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है, उसको जब वहां से हम ला रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें वो बहुत हैवी लॉस होता है बच्चों, एनर्जी का। तो वहां एनर्जी का हैवी लॉस जो होता है, पावर का लॉस होता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम वहां पर क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो किस तरह के ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो थोड़ा सा मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सो यूज ऑफ ट्रांसफार्मर इन लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन, है ना, किस तरह से किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसमिशन, इट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ओनली। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन जो है, जो हम करेंगे, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ व्हाट, ऑफ पावर, है ना, पावर को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, राइट। तो आपको जैसे बताया हमने, अगर हमारा लॉस बिल्कुल नहीं चाहिए हमें, तो ये हमारा यहाँ से पावर सप्लाई हो रही है स्टेशन से, है ना, पावर स्टेशन से, और यहाँ तक हमारे तक पहुंच रही है, सेम पावर हमें पहुंचानी है, राइट। ये यहाँ पर आउटपुट आ रहा है, यहाँ पर इनपुट है मान लीजिए, तो हमें पहुंचानी है यहाँ पर। तो अगर पावर लॉस नहीं होना चाहिए, हीट के रूप में लॉस नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली पावर का फॉर्मूला तो हमें पता है, V इंटू आई, राइट, इंडस्ट्री। तो अब ये V इंटू आई, तो अगर हम ये पावर को बहुत कम वोल्टेज पर वहां से ट्रांसमिट करेंगे तो करंट बहुत ज्यादा होगा, एंड इफ करंट ज्यादा होगा तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, डेफिनेटली डेफिनेटली क्या होगा, हीटिंग ज्यादा होगा। आई स्क्वायर आर टी हम जानते हैं, तो ये आर तो कांस्टेंट है, तो आई अगर हमने बढ़ा दिया तो हीटिंग ज्यादा होगा, तो उस वजह से लॉस ज्यादा होगा, और हीट के फॉर्म में बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी, लॉस हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब पावर स्टेशन से जब पावर को भेजते हैं अलग अलग सिटीज में, तो उसको भेजते समय हम हायर वोल्टेज पे भेजते हैं, वेरी वेरी हाई वोल्टेज, 11,000 वोल्ट। आपने देखा होगा वो जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, जो ये पोल्स होते हैं, इसके ऊपर एक रेड खतरे का सिंबल होता है, स्केलेटन होता है, इस टाइप से होता है। तो वो जो होता है ना, जिसको आप खोपड़ी बोलते हैं रफ लैंग्वेज में, तो वो लाल लाल होता है, रेड सिग्नल, और यहाँ पर लिखा होता है 22,000, है ना, वोल्ट्स या समथिंग। देखा है आपने, पढ़ा है कहीं इस तरह से, पढ़ा है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये हाई हाई वोल्टेज पे भेजा जाता है। आप वोल्टेज अगर हाई कर दिया आपने, तो डेफिनेटली करंट आपको क्या कर सकते हैं, आप कम कर सकते हैं। और करंट आपने कम कर दिया, सो इफ वायर में करंट कम है तो डेफिनेटली द हीटिंग इफेक्ट विल बी लेस, तो वो हीट के फॉर्म में जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्टेज होती है वो नहीं होगी। सो द लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन जो है, इट इज नॉट एफिशिएंट एट लो वोल्टेज एंड हाई करंट, but if I is more, then heating के फॉर्म में पावर लॉस होगा। So power loss can be reduced by reducing I or R, but R of that current, R of that wire you cannot reduce. Yes, you can reduce the wire अगर आप एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल यूज कर ले हम लोग, बट सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का वायर्स अभी तक तो हम बना नहीं पाए हैं। और ओके, दो सुपर कंडक्टिविटी हम लोगों ने डिस्कवर कर लिया, बट एक नॉर्मल वे में उस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल नॉर्मल टेम्परेचर पर वो नहीं बना पाए हम लोग। जिस दिन बना लेंगे और हम बहुत ऐसा वायर बना लेंगे सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का, तब तो ये हीट लॉस बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और हम बहुत बहुत कम मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लॉस के साथ हम एनर्जी को ट्रांसमिट कर पाएंगे, पावर को ट्रांसमिट कर पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पर। बट वो दिन अभी दूर है ना। और जब हम वैसा ट्रांसमिट कर पाएंगे तो रियली इट विल बी अ वंडरफुल रिवॉल्यूशनरी, क्योंकि वहां पर एनर्जी लॉस बिल्कुल कम हो जाएगा। जो आज हमें 3 रुपए पर यूनिट या 4 रुपए पर यूनिट एनर्जी मिल रही है, वो हम मात्र 1 रुपए से भी कम में या 50 पैसे में हमें पर यूनिट
यूनिट बिजली मिल सकती है, राइट? अंडरस्टूड? सो प्लीज समवन इज हैविंग अ माइक ऑन, प्लीज ऑफ दैट माइक, and whenever I tell something, at that time you please on the mic, please. Okay, some sound is coming there. तो बात समझ में आ गई बच्चों? सो हायर वोल्टेज पर भेजा जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, वोल्टेज हाई रखते हैं। तो हाई रखेंगे तो वहां पर कौन से ट्रांसफार्मर यूज किए बताइए? तो पावर स्टेशन से जब बिजली चल रही है तो वहां पर कौन से ट्रांसफार्मर लगाए, किस टाइप के ट्रांसफार्मर लगाए हैं? ऑब्वियसली स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाए है ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिए, राइट, to increase the voltage and to minimize the current, and then we have supplied it. But धीरे धीरे जब हमारे यहाँ तक आ गई बिजली, कहाँ तक आ चुकी है? हमारे cities में आ चुकी है। Now this for the main power station, the electricity should be supplied to the domestic purpose and for the industrial purpose also. तो industrial purpose में industries को जानी है और domestic purpose में भी जानी है बिजली, तो ये आ चुकी है हमारी। तो इसको अब क्या करना पड़ेगा हमको? इंडस्ट्रीज में जो जनरली बिजली यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज रिक्वायर्ड समवॉट 440 वोल्ट, 440 वोल्ट का इंडस्ट्रीज के लिए लगता है, ज्यादा हमको वोल्टेज लगता है, तो वहां पर 440 वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी जाती है। तो फिर क्या करेंगे? ये स्टेशन हमारा है, ये स्टेशन है, पावर स्टेशन कहाँ का है? सिटी का है। तो ये सिटी से बिजली वहां पर चली गई, इंडस्ट्रीज को चली गई। सो अगेन व्हाट विल हैपन? यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा है, नाउ वी हैव टू डाउन दैट वोल्टेज। सो विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज रिक्वायर्ड नाउ हियर? यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर लगेगा, कौन से टाइप का ट्रांसफॉर्मर लगेगा अब हमें? टू कन्वर्ट हायर वोल्टेज इनटू लोअर वोल्टेज, विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर विल बी रिक्वायर्ड? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन, राइट? तो यहां पर हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे। और ऐसा नहीं है कि एकदम से वो 22,000 वोल्ट एकदम से 450 हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टेप डाउन करते चले जाएंगे। एक लगाया, उसने थोड़ा स्टेप डाउन किया, फिर उसके आगे हमें और जाना है, वहाँ जहां पर इंडस्ट्री है वहां पर एक और ट्रांसफार्मर लगा होता है। जब मान लीजिए 11,000 वोल्ट की बिजली आई है वहां पर, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को, उस वोल्टेज को, now that transformer will convert it into 440 volt and will supply into that industrial area at 440 volt. So as per that requirement it will be supplied, not that altogether one transformer will convert into 22,000 to 440, it will not like that. So by step it will step down, right? So that way it is done. Now for domestic purpose, हमारे जैसे हमारे KV1 के बाहर है, तो एक ट्रांसफार्मर, बहुत सारा एरिया है, उस ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर उसको कवर कर लेता है। तो ये हमारे जो KV1 देवलाली में, इसके लिए एक अलग ट्रांसफार्मर लगा है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एरिया, है ना, 10-12 एकड़ की जमीन है, तो बहुत घरों में बिजली जा रही है, यहाँ जा रही है, स्कूल में आ रही है, तो एक सेपरेट ट्रांसफार्मर हमारे लिए है, मान लीजिए, तो वो उस एरिया को बिजली सप्लाई कर रहा है। सो दैट इज giving at 220 volt or 230 volt, we say it is being given this way. तो ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो जनरेटिंग स्टेशन से स्टेप अप करके भेजा, और फिर 1,32,000 वोल्ट पे शुरू होता है वो, तो फिर यहाँ पर आता है हमारा 11,000 वोल्ट पर, और फिर वो 11,000 वोल्ट का आ गया एरिया सब स्टेशन पर आ गया, और देन कंज्यूमर्स सब स्टेशन पर वो 220 वोल्ट पे पहुंचा देते हैं, और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए थोड़ा हायर वोल्ट पर, कमर्शियल पर्पस के लिए पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं। सो आई थिंक यू आर वेरी मच, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो विद Yes, दिस sir. can we stop this now? So thank you very much.